Hello and welcome back, ladies and gentlemen. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Notwin Gaming. We are in week number 2 perhaps, and my name is Fixes, joined along with TTR. So, TT, it's the final game of the evening and we've got your favorite club
playing in this one, East Bengal FC. But the home side is, of course, going to be Northeast United FC. So the matchup stands as Northeast United FC taking on East Bengal FC. Now, we have seen some interesting turn of events for them. Northeast United, especially this club, with having such a stacked up roster, could not win against Hmm. Bengaluru FC. Now, let's take a quick look at the matchup right now. Who's going up against whom? And there you have it, Saranj taking on Akshat. And then we have Imad going up against Beno 7. Now, it's going to be an interesting one, but I'd love to hear your thought on this one. या बेनो 7 आई थिंक ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से पिछले दिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा ही रहेगा फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी बट अक्षत को इधर बहुत कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि वो उनके ऑपोजिट पे खेलने वाले हैं सरांश एंड उनको रोकना बहुत टफ है लाइक अगर मैं बात करूँ इधर जितनी भी फीफा कम्युनिटी को फॉलो करती है फिर फीफा को फॉलो करते हैं सबको पता है कि सारांश के कैपेबिलिटीज किस हद तक है और वो किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं हालांकि पिछले वीक पे उनका सामना हो गया था चरण जो कि मॉन्स्टर जैसे कि हम लोग इसके पहले भी डिस्कशन किए थे उनको एक शॉट लेने का मौका नहीं दिया गया था सारांश को तो इस बार वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे क्योंकि उनको अपना पहला गोल भी चाहिए पहला शॉट भी चाहिए एंड वो चाहेंगे कि उनका जो वो डेडलॉक है वो तोड़े उसके साथ And that's a very, interesting fact that you brought up. He was not allowed to take a shot. So goes on to show that the hunger, the lion, Saranj that he is, the champion, the defending one, is wounded. And that's where he's the deadliest. As Northeast United FC, the kickoff is already there, and they're playing from left to right in their white kit, whereas we've got East Bengal FC in that red and gold. But for now, I mean, TT, of course, you love East Bengal FC, just your neighborhood club. And well, last time all they could salvage was a draw, but this time they have to go with something beautiful. But Saransh, look at that play, look at the composure. And Akshat was just left looking, staring as Saransh just decimated through and scored a goal. I mean, initially we saw that goalkeeper making a press, and then he realized, oops, that could be a mistake. There could be a pass, and that is exactly what happened. And Akshat fell into the traps, and in the blink of an eye, just 5 minutes passed by, and Saransh has taken over the lead. आई थिंक थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इधर ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से अक्षत को मेनली क्योंकि अक्षत शायद रेडी नहीं थे इसके लिए कि इतना जल्दी आ जाएगा पास एंड वो गोल आ जाएगा सो या अभी के लिए थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे गेम को एंड आई थिंक कि कमबैक होने के चांसेस अभी भी है एंड जस्ट शुरुआत है तो कमबैक तो हो सकता है बट लेफ्ट साइड को देखिए किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है शरांस की तरफ से तब से एक ही अटैक बना था हालांकि सिर्फ 8 ही मिनट हुए तो एक ही अटैक बनने का मौका मिला था एंड वो एक ही अटैक लेफ्ट साइड से बना था एंड मेसी टू हुलीत से एम्बापे ओह माय गॉड व्हाट अ फिनिशिंग सारांश आज सिर्फ और सिर्फ मैजिकल गेम प्ले दिखाने के लिए आए हैं एंड वो हर एक टच जो भी कर रहे हैं वो सोना बन जा रहे हैं कुछ उस तरीके का गोल देखने के लिए मिल रहा है सो 11th मिनट के ऊपर दूसरा गोल आता हुआ एंड अक्षर अभी यही सोचेंगे कि बचे कैसे गोल स्कोर तो बाद में करना होगा I mean, at this point, Akshat is just left stranded. Okay, this could be a good possibility, but again, Virgil van Dijk to save the day for Saranj. And Saranj, every single time he's been making a run, he's ensuring that he scores a goal. And Akshat just absolutely stunned at this point. How do I make a comeback into the game? What do I do? Because if Saranj gets that third one, I think we are potentially looking at maybe a 6-0, 7-0, 8-0. You call it. I've seen this player score as many as 14 goals even in a game. So Saranj Jain, one of those players, you can never rule him out. Did not have the best start into his campaign this time around. Went off against the big elephant that was Charanjot, and we know what Charanjot did to him. But this time, Saranj, he's got vendetta in his eyes. He's just looking forward to that rematch, and every single opponent that comes along his way, he's prepped up to just crush them apart till he meets
his arch nemesis, that's going to be Charanjot. But the interesting fact, ladies and gentlemen, barring the club, if you know talk about their the other life, their out of EISL, Charanjot and Saransh, they're basically teammates. Both belong to the same organization and are brothers. But still, when you are playing FIFA competitively, nobody's a brother in game. या एंड आई थिंक दैट्स व्हाई चरणजोत बिल्कुल भी इधर सारांश को नहीं अलाउ किए थे उनके डिफेंस के ऊपर बट आज सारांश दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं बट चेंज किया गया बहुत अर्ली सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है ओह माय गॉड ये इंटरेस्टिंग था बाय द वे लूशियो को इधर डाउन किया गया एंड हालैंड को लेके आया गया है और उसका आश्चर्य यही होगा कि आप डिफेंडर को हटा चुके हो एक and yeah, Samba, Ronaldinho and Saransh, Northeast United, उनके फैंस सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये फर्स्ट क्वार्टर को देख के एटलीस्ट क्योंकि जिस तरीके से 18 मिनट के अंदर 3 गोल्स हो चुके हैं उससे एक चीज तो पता चल ही रहा है एक और गोल हो सकता है शायद. That was so well made. Oh my goodness, Saransh is just toying around at this point. And Akshat, at this moment, I feel really bad for him, but this could be a good one. He needs to chip it. Oh, instead goes for the ball roll and finally converts it. And shows that he's just not going to back down without a fight rather. And manages to score one. Beautiful composure shown by Akshat in those final moments. When, you are one-on-one against the goalkeeper and he's charging at you, you've got a few options. Either you go for the power shot, either you go for that chip shot, or you go for that ball roll into scoring, and he opted for the third one, and fortunately it worked out. But look at Saransh again trying to build up his play. He's got a plethora of that moves, right? He's not one of those players that you can say he plays just around the basics, the fundamentals are strong, already is, but when it comes down to choosing the right skill move, passing to the right player, he's got that in him as well, as a result of which again another chance being created, but this time Akshat there to avert that threat. हाँ, अक्षत आई थिंक मुझे लगता है कि उनको जस्ट थोड़ा सा रुक के एक डीप ब्रेथ लेने की ज़रूरत है एंड उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना जल्दी सब हो रहा है उनके लिए शायद प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है बट उसी के बीच में एक गोल आ गया था बट एक बार फिर से एक और गोल आता हुआ दिखेगा एंड जब भी आप आई डोंट नो व्हाई कि वेंडे सार को इतना ज़्यादा एडवांस करके क्यों लेके आए ना उनका जो है वो डिफेंस लाइन तोड़ा गया था ना उनका डिफेंस लाइन को पीछे छोड़ा गया था बट फिर भी अक्षत इधर अपने वेंडे को आगे लेके आ रहे हैं हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो कि अग्रेसिव मूवमेंट के साथ आगे आने की गोलकीपर को बट ये हटा देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो आगे आ रहे हैं बार बार उसका फायदा मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को एंड उसके ऊपर गोल्स के बाद गोल्स आगे जा रही है सो इस बंगाल से आई थिंक उनको ज़रूरत है थोड़ा सा पॉज लेके फिर गेम स्टार्ट करने की जल्दबाजी करेंगे मुश्किल होगा बट इस बार मौका इधर भी जल्दबाजी करेंगे I mean, had it been me, I would have also taken that shot, especially considering the fact that you have Mbappe really quick on can just receive the ball and take the shot, and I think just lacked a little bit of power and an angle, but it's good that Akshat is trying to at least put pressure, try to not just let Saransh storm through him. He's creating those defense splitting passes, but like you said, Tita, I completely agree with you. I still cannot digest the fact that he's putting his goalkeepers advanced charging at such a direction. When we know that such tactics, such moves do not work against an opponent like Saransh. He's gonna read you like an open book, and that is exactly what he's been doing for the past 4 goals. And now Akshat again building up on his attack, and well, let's see what can he make out of this one. Well, Haaland wanted to make a pass on towards R9, but when we thought that could have been a really ludicrous change where he subs out Lucio for Haaland, I think he made a change. I think Maldini came instead of Lucio, and on the front line I think he's changed somebody. Yeah, maybe. एंड ये भी हो सकता है कि उनके फॉर्मेशन पे चेंज किया गया है क्योंकि शुरुआती में 5 एट द बैक खेल रहे थे बट एज ऑफ नाउ ही इज प्लेइंग 4 एट द बैक बहुत
शानदार, मतलब हल्का टच था, बहुत शानदार था, बहुत जरूरी टच था, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिफ्थ गोल आता हुआ दिख सकता था शरांश की तरफ से। बट फर्स्ट हाफ के बाद किसने ही सोचा होगा कि 4-1 का स्कोर लाइन बन जाएगा। फर्स्ट हाफ में 5 गोल ऑलरेडी हो चुका है दोनों तरफ मिला के, एंड सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का इधर हम लोग को 4 गोल देखने के लिए मिलता हुआ। सो सारांश, वी नो कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, एंड उसी के साथ स्किल्स की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे। इधर स्किल्स तो हर एक प्लेयर के पास है, बट जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं इधर सारांश अपने गेम के ऊपर, एंड जिस तरीके से वो रीड करते हैं ओपोनेंट को, वो काफी अच्छा। हालांकि इधर देख सकते हैं कि ड्रिबलिंग सक्सेस 100%, शॉट एक्यूरेसी 100%, ये दोनों चीज हो सकते हैं 100%, क्योंकि उतना ज्यादा यूज ही नहीं किया गया है। अगर उतना ज्यादा यूज करते तो शायद ये ड्रॉप हो सकता। Yeah, of course. And take a look at Saransh's shots, right? 5 shots taken and 4 of them converted. The ratio is just too good. And at this point, what do we say? He's been the better player in every single aspect. And taking a look at how Akshat has been playing, to be honest, I think he's been relying heavily on those counter attacks, because when we see Saransh commit, he commits with every single thing he has, right? He gets all of his players running, and he makes it run. He has players he's got those passing options even in those final thirds, and he makes sure that he converts it. And now, ladies and gentlemen, we are off again with the matchup resuming, and it's the second half, and scoreline is 4-1, and Saransh off to a very staggering lead. And this is where Saransh gets even deadlier, trying to build up an attack. One of those, I felt that pass was really unconventional, because you don't see those mid-lob passes usually directly from the box. So I think at this point, Saransh is just experimenting. He's got so much, he's got that cushion, a thick, fat cushion that he can play around. And now attacking from the wings with Mbappe, passes it on towards Messi. And now this time, Akshat being a little bit cautious, and at least he's keeping Saransh at bay. Offside. Yeah. But जब भी ढुलीट इधर रन लगाते हैं तब समझ में आता नहीं, क्योंकि उनका फिजिक ही इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, और बहुत जल्दी भी पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट। बट मेसी की तरफ से कोशिश था कि वो रोनाल्डो ज़ारियो के लिए वो पास निकाले, बट वो नहीं निकाल पाए थे लेफ्ट हैंड साइड से। रन निकालते हुए दिख सकते हैं अर्लिंग हालैंड। यस, उनके लिए बॉल खिलाया गया है बीच में एम्बापे, बट नहीं, वो खाली नहीं थे। रोनाल्डिनियो रोनाल्डो एंड बॉल छीन लिया गया बहुत इजीली, लाइक ब्रेड एंड बटर की तरह इधर बॉल्स छीने जा रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए फिर से एक बार प्रेशर बनाने के लिए सारांश आगे भागते हुए, एंड पूरा डिफेंस अभी के लिए तो तितर-बितर हो चुका है। Oh, this could be devastating, but how? Wasn't that green time, TT? And it was such a perfect angle. Thank goodness that Akshat's keeper was right in front of him, and this could have been a lob-through pass. But Saransh, I think, read through Akshat's ideas, and this is where Saransh is back on his attack again. A beautiful defense splitting pass. Look at how Mbappe misses it. How? No way. That was such a beautiful pass. It was so simple, and Akshat had literally no answers. There was no man marking, and Sharks could have gotten the fifth on board. But thankfully, Mbappe misses. I still cannot process how is that TOTY Mbappe with his strong foot missing shots like that. या आज शायद दिन ही नहीं है एम्बापे का, क्योंकि जिस तरीके से वो शॉट्स मिस कर रहे हैं शुरुआती से। फर्स्ट मैच की अगर बात करें तब से हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है, बट रोडुलिट वर्सेस रोडुलिट, बट फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के रोडुलिट ज्यादा स्ट्रांग निकले इस बारी तो। एंड केविन डी ब्रुयने तो थियो हर्नांडेज, वाओ, बहुत शानदार पोजीशनिंग एंड मोमेंटम जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं वो काफी अच्छा था। बट ये स्लाइडिंग टैकल बहुत कुछ चेंज करता हुआ दिख सकता है। उसी के बीच में एक बहुत ही गलत पास, जिसकी कोई भी जरूरत होता नहीं है, और आप बीचों बीच में तो कभी भी ऐसे पास नहीं खिलाते। ये गलती अगर आप करेंगे इतने बिग स्टेज पे, फिर तो प्रॉब्लम्स होने वाली।
those small skill moves. I think that was a reverse elastico that he performed, and so was the beauty. The defenders were just kind of stupefied and doing what to, figuring out what to do. But this could be a good chance with Mbappe. I think TT, he could have gone for a shot. There was no reason goes for that Rule, but this time Saranj. I think, I must say, to be honest, Akshat has had a great second half so far. No matter, he hasn't, no doubt he hasn't, scored a goal, but the good news is he hasn't conceded any. And this is exactly the kind of Akshat we wanted to see in the first half of the game. But Saranj just having that four goals scored for himself, and Akshat could get one more, a green time, perfect finish. And now the margin is reducing. It's 4-2, and Akshat is making a comeback. Look at how he's retrieved on his possession. Look at how he's getting those shots constantly back to back. And with 14, in fact 13 more minutes remaining, if Akshat can miraculously, score two more, then this would be a huge blow for Saranch at this point. Not sure. And I think अभी कुछ फ्रेश लेग्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पिच के ऊपर फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से आई थिंक चेंजेस अभी भी नहीं हुए हैं, सो मे बी उनके तरफ से भी हम लोग को चेंजेस आते हुआ दिखे। बट जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, 4 गोल कुछ ज्यादा ही कंसीड कर लिए थे फर्स्ट हाफ के ऊपर। अगर वो 2 भी करते या फिर इवन 3 भी, तो शायद अभी भी बहुत सारा होप रहता कि वो इधर से कम बैक करे। बट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से 2 प्लेयर्स को इधर चेंज करते हुए दिखेंगे, एंड वो होने वाला है बेलिंगम, लाइक मेसी को डाउन करके बेलिंगम एंड डे ब्रुयने को डाउन करके इधर लेके आ चुके हैं, और कैप्टेविला भी आएंगे हर्नांडेस के जगह पे। तो 3 चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। तो फ्रेश लेग्स की कोई भी कमी नहीं है, पेस प्रॉपरली देखने के लिए मिलेगा। और उसी के बीच में हकीमी के लिए बॉल खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ। काउंटर पे जाता हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, 1 पास एंड पूरा गेम समअप हो सकता है। गिनोला वाओ, गैरेथ बेल। I think we've seen Gareth Bale being used as a left back also in situations like that, and I think it's the flashback Gareth Bale that we're talking about has got that blistering pace and utilizing it. A beautiful, oh my God, Akshat! You can see that glee smile. Yeah, that end of an era Gareth Bale card, 93 rated. Came out as an SBC, a must-do SBC. The only fallacy with that card was it was very difficult to build up a chemistry. Since his last club was in MLS, so not a lot of players you can team him up with. But as a super substitute, is quite effective and clearly showing his guile. And Mbappe scoring again. Akshat. Oh, that was an offside. Even I had a tiny thought in my mind could have been offside, but thankfully Saar Save, at least for now. He could be a little happy about the fact that he might just go on winning. लाइक जो पासिंग था वो लाइक बटरी, लाइक जिस तरीके से वो बॉल पास किए थे एम्बापे को, मुझे लगा लाइक ये तो मैजिक है, लेकिन उसके बाद ऑफसाइड हो गया वो। बट देखिए एक बार फिर से मौका बनता हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, बट वैन डे सार इधर सेव करेंगे और टाइम हो जाएगा खत्म। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो शुरुआत उनको मिला था फर्स्ट हाफ के बदौलत, वो जीत के गए इस गेम को। बट जो सेकंड हाफ पे कमबैक आया था इस बेंगल एफसी की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा शानदार था। क्योंकि सेकंड हाफ आई थिंक मुझे तो लगता है कि इधर शैडो कर दिए थे सारांश को, एक भी उतना कुछ खास अटैक बनाने का मौका नहीं दिया गया था। हालांकि शायद एक मिला था मौका जिसपे गोल स्कोर हो सकता था, बट उसमें नहीं करने दिए। बट इस बेंगल एफसी की तरफ से हम लोग को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला सेकंड हाफ के ऊपर, जैसे आपने भी मेंशन किया था। बट देखिए इधर शुरुआती में अगर आप इतने सारे गोल कंसीड कर लेंगे, इसी वजह से मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि शायद एक डीप ब्रेथ लेने की जरूरत है एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी हम लोगों को दिख। Yeah, I think you're 100% right in that one. In situations like that, when you're constantly just getting hammered down by opposition, just take a pause. Need not make any changes if not necessary. Just get a reset and think of it, because had Akshat taken that pause a little early on, then things would have been a lot more different. And I loved how Akshat played in the second half.
undoubtedly, I can just go on to say that he was the better player in the second half. So if you talk about getting conditioned both mentally and in game, Akshat did it all. And there were moments where, of course, Saransh just was stomping through, but Akshat was looking not far behind, right? There were moments where, few like a goal like this, perfectly green time and R9 that position. There's no chance he'd miss that one. Maybe Akshat could have gotten the third one as well. Mbappe just a little high, and that was a very close call. And there had been multiple instances where he had been constantly creating chances. So Saranch, I think, despite having a bad second half, still those 4 goals scored in the first half were enough to see his individual matchup through. But now it's time for game number 2. And now it's going to be Saranch and Imad going up against Akshat and Beno7. Now this is where, things get a lot more trickier. Because if somehow, let's say, East Bengal can win the co-op matchup in the third game, I really somehow feel that Beno7, he's got what it takes, just to win it out. Because I think this was a matchup against DK where Beno7 was trailing, I think 2 goals behind or something, and he goes on to win the game, scores the winner, and does it all for his team. And this has been such a huge transition for a player like Shanthan, because Shanthan, if you ask any of the players or the viewers who are joining from season 1, was a very shy, very underconfident player initially, right? He did not used to speak a lot. It was always Ankit Gupta, and considering Ankit Gupta was not retained, was not playing in this season, I was kind of getting worried what will happen to East Bengal FC, because Akshat really had huge shoes to fill. But it was their knight in shining armor, Beno7, that stepped up, a local boy for East Bengal FC fans, and doing the same, and getting that win. At least ended off with a draw, but now he's got vengeance in his eyes. Imad, another beautiful player, the player who's got one of the best fundamentals in the game, who's you can say, king of finesse shots. You can say he does not make a lot of skill moves, but the shots he takes and the position he takes from have been very good. So it will be an interesting individual matchup, but co-op game, let's see, anything can happen. What do you expect? I think ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे कहना ही होगा. बट आई थिंक ईस्ट बंगाल एफसी के पास थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा. जिस तरीके से मैंने गेम्स देखे हैं अभी तक, जो ऑब्जर्व मैंने किया है, मुझे लगता है कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन बेटर है अक्षत एंड Beno7 का. अगर मैं बात करूं, हालांकि एक दूसरे के खिलाफ नहीं आए अभी तक, एंड जब भी हम लोगों ने इसके पहले परफॉर्म करते हुए देखे हैं, वो बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहने की डिलीवर की है. बट ऑन द अदर हैंड, इमाद एंड अगर सारांश की बात करें तो इमाद एंड सारांश, लेट्स सी वो किस तरीके से खेलेंगे. बट ओवरऑल वो होता है ना कि थोड़ा बहुत अपने फेवरेट टीम हो जाता है. एंड आई थिंक फिक्सेस इसी वजह से तब से देख रहे थे. हाँ, अच्छा ऐसा. Because they lost 4-1 to DK and Arvind. I was like, अच्छा खेला था. I was like, okay. Suddenly TTK, अंदर से वो ईस्ट बंगाल एफसी का फैन जग गया, तो आत्मा आ गई बाहर. But yes, they have a lot to prove. We have seen. Let's be honest. We have seen teammates. After the first week, they had that huge gap, a whole week to work on their teamwork. So maybe we are just hoping that your words come true. But when you've got Saransh and Imad on the opposition, even the best of the players kind of tend to just crumble down. Because if we take a look at the scoreline, I guess if we see, I think I'm pretty sure Saransh and Imad were just taken up for a ride, and against Saranjot and Chatnik, 2 amazing players. What would you expect? And they looked a little lousy there. But this time, I think it is a wounded Northeast United FC, touted to be one of the strongest teams in the in fact, strongest clubs in the eISL. And look at that time. I mean, wow. I mean, I literally look at some 60-70 million team right over there. Every single player, I'll tell you, every single card is worth my whole, is more than worth my whole squad, what these players possess. शुरुआत हो चुका है फाइनली मैच नंबर
2 इस मैचअप के गेम नंबर 2 का शुरुआत हो चुका है। रोनाल्डिनियो एज ऑफ नाउ लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो प्रॉपरली अभी कॉन्फिडेंट होंगे, बट इमाद को मैं कुछ दिन पहले देख रहा था लाइक वो अपने स्ट्रीम पे खेल रहे थे, तो उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया अपने गेम प्ले के बारे में एंड अपने जर्नी के बारे में। तो उन्होंने लाइक हालांकि लाइक कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही ईयर्स हुए हैं जब वो चेंज हुए हैं फीफा पे। उसके पहले वो दूसरे एक फुटबॉल गेम खेलते थे, तो ऑब्वियसली लीग का उसके बावजूद आके इतना बेहतर परफॉर्म करना फीफा के अंदर एंड वो बहुत ही शानदार है। एंड इससे एक चीज़ है लाइक जैसे कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, क्या आपके पास हर एक डायमेंशन का फिर एक्सपीरियंस आ जाता है, सिर्फ फीफा के अंदर ही नहीं। सो आप किस तरीके से प्रेशर को डील करोगे वो भी आपके पास एक्स्ट्रा चांसेस बनता है। देखिए बात कर ही रहे थे प्रेशर डील करने की, बट इस बार डील करना होगा इस बंगाल एफसी को एंड दोनों इस बार बहुत ही क्लोजली बच गए क्योंकि शॉट ऑन टारगेट नहीं था, क्योंकि शॉट ऑन टारगेट अगर होता तो चांस बहुत ही कम मिलता है इधर गोल रोकने के। Undoubtedly, I think there's no questioning that step over into switching his legs, taking that shot, you would expect. But you know, considering it was a near post finish attempt, that didn't go through. The keeper was just present over there. But like you said, Imad. I mean, the last time the title we had given him was the chocolate boy of eISL. He's the heartbreaker of so many ladies out there, and a cutie. And he's such a player that is always calm, always composed. Just look at it. Has made a poker face, is very steely demeanor, knows that he needs to focus on the game. And just another correction, ladies and gentlemen. The last time, Saransh and Imad came up against Charanjot and Shagnik, it ended up with a draw. But this looked like could have been the opening goal. But that was not the case. So one thing we are witnessing is they're making the right passes. And their intention is, no matter if it's from the sides or if it's directly a frontal attack, they go in with that step over. And step over in the current meta is really good. Like we said, again, step overs and the German crosses. These two things are quite effective so far. We haven't seen a lot of those German crosses, but yes, seen players trying to keep things as simple as they can. And let's see who gets to break the deadlock. या बट शुरुआती 20 मिनट की अगर बात किया जाए तो प्रॉपर कंट्रोल एंड डोमिनेशन दिखा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। बट लेट्स सी लाइक क्या इधर से इस बंगाल एफसी की तरफ से भी कमबैक आता है कि नहीं। हालांकि इधर एक मूव बनता हुआ, लेकिन मार्डिनी जब तक है तब तक बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मार्डिनी का स्पेशली जो लेग साइज है वो कुछ ज़्यादा ही है, और वो कभी बार तो ऐसे भी होता है जब मेरे ओपोनेंट में आते हैं वो दूर से सिर्फ पैर निकाल के बॉल खींच लेते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर देता है कभी कभार। बट लेट्स सी इस बार क्या होगा। एम्बापे टू डे ब्रुयना एंड एम्बापे, इधर एक मौका बन चुका है मेसी के लिए। राइट साइड से हकीमी का रन, एक पास, काम खत्म हो सकता है। रोडलित, I mean, that could have been really it, right? And went in for that ball roll with Hakimi. And with the TOTY card, you wouldn't shy away from shooting. But this was a good chance. But Virgil van Dijk making that charge tackle, very important one. And this time, like we had anticipated, East Bengal FC, they've done their homework. They have tremendously improved on their co-op. And considering, Akshat, he needed some time to settle down against Saransh, but seems like he's gotten the hang of it. He's holding on pretty strong. And even for Akshat, the last year, eISL Season 1 was his first, pro FIFA tournament. Before that, he used to just play for fun in his MBA college. I do not know if he's done with his degree, but he's back with us through the qualifiers this time, playing from East Bengal FC. And he was always a late bloomer. I remember in the first season, but once he started delivering, he went on to give us some big surprises. And for now, the first half has been predominant by the players of Northeast United FC. But one good thing for all the East Bengal FC fans is the fact that they have kept them at bay. And Mbappe looks to be injured, but seems like it's just an arm or maybe a shoulder problem. Should be fine. Yeah. एंड बाय द वे अभी तक जिस तरीके से इधर देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के तरफ से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जार्जिनियो को उतना ज़्यादा इन्वॉल्व
होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक इस बंगाल की तरफ से। एंड बहुत सारे टाइम ऐसे भी मुझे लगा कि जिधर वो थ्रू बॉल खिला सकते या फिर लॉफ्टेड पास खिला सकते थे उनको, जिधर से एक मौका बन सकता था, वो फिर भी नहीं खिलाया गया। ये भी इधर प्लेयर्स को क्लोज लेके आने की कोशिश, बट एक बार ट्राई था दूर से, क्योंकि केविन डे ब्रुयने कैपेबल है इस तरीके के शॉट्स लेने के लिए। एंड उसका ही थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन नहीं, ट्राई करके ही देखते हैं। जब क्लोज से नहीं हो रहा था तो दूर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो कुछ उस तरीके का ट्राई था। बट वैन डे सार अपना काम पूरा करता हुआ, लेकिन प्रेशर अभी तक हटा नहीं है। प्रेशर अभी कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, लेकिन इस बार क्या वो निकल पाएंगे? थियो हर्नांडेज टू एम्बापे, आई थिंक एक मौका है। जार्जिनियो अभी भी खुले में राइट हैंड साइड पे मूव करते हुए, क्या वो पास खिलाएंगे जार्जिनियो को? बेलिंगम उनके पास है, वो लॉन्ग पासेस खेल सकते हैं, बट डायरेक्टली इस बार क्या रोनाल्डो के लिए लेफ्ट हैंड साइड से एम्बापे रन निकालते हुए, क्या ये पास जाएगा? आई थिंक नहीं, थोड़ा सा विजन की जरूरत है। वो विजन एक बार आ जाए तो इस बंगाल के लिए शायद पहला गोल आ सकता है। I think what the intention was with Mbappe was try to go for a ball roll and then maybe shoot, because even from such tight angles you can score with an Mbappe. And wow, okay where were the players for East Bengal FC? And so far, I mean, considering how the scoreline has been, I must say East Bengal FC, they've been more on that defensive side, to be honest, because we've just seen them try to take a few chances on the counter attacks, but it has been Northeast United FC trying to constantly keep applying pressure, keep hitting the hammer until the nail sticks in. So that is their intention. But one thing, that long shot being taken, I'm pretty sure it's Imad. He does that quite often, and it's just not this season, TT. If you had witnessed in the last season, the sort of those finesse shots he used to take with Messi, talk about scoring direct corner goals, it's all Imad. He does that, and he's like, yeah, I just did that, I felt it was cool. He's that kind of a player, a very good personality, very humble guy, but humbleness won't win you trophies, right? You need to score goals for that, and we are on with our second half. फाइनली जब भी हम लोगों ने देखा है कि लेफ्ट टू राइट अटैक करने के लिए जाते हैं इस बंगाल एफसी, तब इस बंगाल एफसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। पिछले मैच में भी वही सिनेरियो था, एंड इस मैच के ऊपर भी शुरुआत देखिए काफ़ी एग्रेसिवली किया गया है बाय द वे, रोनाल्डो सही के ऊपर जाके दौड़ते हुए, जिसका कुछ फ़ायदा उतना हो नहीं रहा था। एंड फिर भी इधर पास खिलाया गया मेसी टू हर्नांडेज, एंड लेट्स सी क्या सारांश या इमाद इस बार इस मैच के डेडलॉक को ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक एक शॉट ऑन टारगेट था उनका, टोटल 2 शॉट्स से, जिसमें से एक शॉट ऑन टारगेट हम लोगों को देखने के लिए मिला था, जो कि वैन डे सार ने बहुत इजीली सेव किया। उसको छोड़ के दोनों ही टीम्स के कुछ खास अटैक बना नहीं इस मैच के ऊपर, दोनों का ही डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिला। देखिए एक गलत पास वर्जिल वैन डाइक, एंड इस बार एम्बापे से रोनाल्डिनियो बहुत ही जल्दी काउंटर में जाते हुए, लेकिन उनके पास कोई पासिंग ऑप्शन ही नहीं है क्लोज कि जिनको वो पास खिलाए। सो या, एंड प्लेयर टू वॉच हमेशा जब भी देखेंगे तो मेसी ही होता है यूजुअली। all right, every single time Messi pops up, TT will have a smile on his face, and we've got that never-ending debate going on, or which might have been settled with Messi finally winning that World Cup, and I'm really surprised that this time we haven't seen Cristiano Ronaldo even once. I think there have been 2 really good cards for Cristiano Ronaldo. One of them being the rule breakers Ronaldo, and then we had I think the flashback Ronaldo card. And none of these players, I mean, the flashback Ronaldo, we have seen some of the players trying to use it as their super sub and get him inside the game. But look at Northeast United FC, a beautiful cutback, but well read. And East Bengal FC, 100 marks for them with that beautiful defense. Now coming back to Cristiano Ronaldo, I think we also just recently witnessed a Team of the Week Ronaldo, but that wasn't quite popular considering the league that he's playing in. So very hard to link up with. But still, I must say, if you ask me personally, he's one of the best finishers in the game. His animations, especially. For sure. Now, every single shot he takes looks like this is going to go in. Yeah.
बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ हो जाता है कि आपका केमिस्ट्री जो है वो नहीं बन पाता. बट देयर वाज अ कार्ड रूल ब्रेकर रोनाल्डो, जो कि अभी भी शायद उनके प्रीवियस क्लब के ऊपर ही बेस्ड है, Yes. जिसको आप लिंकअप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. बट आई थिंक इधर जो प्रोफेशनल सिनेरियो है इसमें 91 के कार्ड्स को यूज उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा. रेटिंग के मामले में ये कहा जाए तो 91 नॉट दैट अप टू द मार्क. दैट्स व्हाई मे बी यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसको छोड़ के भी बाकी जितने अभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं ऑन द मार्केट, मिनिमम जो रेटिंग है वो 93 हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है एवरेज. सो आई थिंक इसी वजह से जो है वो यूज उतना नहीं हो रहा. बट या लेट्स से लाइक इसके बाद अभी भी सीजन बाकी है, क्या कुछ न्यू कार्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे या फिर नहीं, वो तो टाइम के बाद ही पता चलेगा. बट अभी तक ये गेम देख के तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने तरह से अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए अपने गोल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. बट इस बार जो न्यू लेग्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो फ्रेश लेग्स को इधर इंट्रोड्यूस किया गया, लेट्स से क्या उसका कुछ फायदा मिल पाता है कि नहीं. So it's been sort of an end-to-end game, right? Like we've seen both these teams trying to create opportunities, both these teams just going all out. I mean, it's understandable that East Bengal are constantly just playing on their toes because they need to watch out. One single small opening, one chink in their armor, and North United FC might pierce through. Look at Mbappe making such a devastating run. A beautiful ball roll, passes it on towards Ginola. R9 turns and he takes a shot. Finally, after 69 minutes of constantly trying to press in, they have created that opening. And East Bengal FC, got to feel bad for them. They were playing amazing up until now. And can't really blame them also. It was just how good the players of Northeast United FC were. Saranch and Imad creating that opening opportunity and seizing it. They are 1-0 up ahead. He is just too good. ऑब्वियसली ये बात कहनी होगा, जिस तरीके से उन्होंने टर्न किया मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इधर बैठ के कि वो वैसे टर्न करेंगे. एंड उसी के साथ जस्ट विद द गोल, बट पहले ऑन द अदर एंड, ओह माय गॉड, वर्जिल वैन डाइक इक्वलाइजर होते होते बचा लिए. क्योंकि पहले अगर एक बार रिलीज कर देते शॉट को, फिर वैंडे सार क्या कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि 98 रेटेड कार्ड उनके पास सब कुछ है, पहले के पास सब कुछ है. एंड या लेकिन वर्जिल वैन डाइक वो नहीं किया. Oh god. क्या What? Oh Sara. इतने बेहतर ट्रैवलिंग के बाद वो बाहर शॉट कैसे मार सकते हैं. Oh Sara. Oh, I think it was very difficult to even keep up with the kind of skill moves he had chained in those moments, right? One after the other just came on kept on coming. Oh my goodness. I mean, what do we say, TT? I think all Northeast United FC needed was that one goal, and even I think it comes down to your mental state because East Bengal, they did everything in their playbook to try and make it a draw. But once you concede that goal, it sort of breaks down, and then your defenses open up. And has happened with me multiple times, will be the case, even would have been the case with you also, and all those players who've been, playing FIFA 23. We know the moment you concede the goal so late into the game, and then you have that tendency to keep on conceding. But a short corner is what maybe Northeast United FC are planning at this point. बहुत बहुत सारे अच्छे खासे लाइक चांस इधर बन रहे हैं, और उसमें तो एक गोल मिल भी चुका है. बट अभी तक इस बंगाल की तरफ से देखिए बात तो कर रहे थे कि बहुत अच्छा गेम चल रहा है ऑब्वियसली, बट उस जगह पे एक चीज तो कहना ही होगा कि डिफेंस में अभी तक गेम चल रहा था, बट इस बार टाइम आ चुका है अटैक पे जाने की. एम्बापे विद द शॉट, बट वो जाके रुका हॉलैंड के पैर पे. एंड विद 1-1 कम बैक होता हुआ ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से. एंड यही होता है कि लाइक ये कमबैक कुछ मिष्टी दोई की तरह था जो हम लोग खाते हैं बहुत ज्यादा. Tell something in Bengali right now. Tell something in Bengali. I can see that boy is coming out for all the East Bengal fans out there. ইয়া এখানে কিন্তু সকলেই যদি আমরা কথা বলি এই মিষ্টি দইয়ের মতো গোলটা দেওয়ার পরে এই যে কামব্যাকটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে, সেটা কিন্তু অসাধারণ ছিল.
আর এবার অবশ্যই দেখতে হবে যে ইলিশ মাছের এই টাচটা কিরকম ভাবে আরেকটা গোল নিয়ে আসতে পারে কিনা। All right, now all the in fact, all the East Bengal FC fans are going to get elated. Especially after they managed to score an equalizer, and that was such a well-built run. The players just giving in for a moment. After the deflection, I felt like maybe the chances has diminished, but no, Haaland was there to poach it, and they have managed to make a comeback inside this game. What a matchup! I think has to be one of the best matches of the evening that we have seen. It's so end to end, and still in those final 10 minutes, I think that we have a winner on our way. या लेट्स सी क्या वैसा कुछ मौका मिलता है कि नहीं, बट इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वंस अगेन अटैक बनाते हुए जिनोला, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। न्यू कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनोला का प्रेजेंस भी अभी एज अ सुपर सब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। रोडुलित बॉल निकालने की कोशिश, दोनों के बीच में से इधर रोल करके बॉल निकाल के लेके गए, बट एज ऑफ नाउ पेले शॉट लिए थे, बट वर्जिल वन डाइक वन मोर टाइम, उनका जो ये शील्डिंग हम लोगों को देखने के लिए मिला ये काफी अच्छा था। बट एम्बापे टू बेलिंगम, एक गलत पास, एंड ये बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है इस बंगाल एफसी के ऊपर। Indeed, at this point, Northeast United FC constantly trying to pressure down the players. Mbappe with beautiful heel to heel, went in for that outside footer shot, but Van der Sar making the save and out for a corner, exploring their options. Maybe would opt for a short one. Giving it up to Pele. Let's see what can they make out of it. A lot of room there, but goes directly for that shot. Oh my goodness, that was Imad oozing all over, and he tends to take those risks, and sometimes it gets rewarded. But this time, the crossbar saving East Bengal FC from a defeat, as Northeast United FC could be the final attack of this game. Oh my God, what a game! Obviously, ये बेस्ट गेम था अभी तक का देखा हुआ हमारे जितने भी मैचेस थे, सिर्फ को भी नहीं, शायद इंडिविजुअल मैचेस के अंदर भी सबसे ज्यादा बेस्ट गेम था अभी तक। जो है संभालना होगा इस बंगाल एफसी को, क्योंकि जिस तरीके से एम्बापे एंट्री लिया और उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाई इधर डिफेंडर पीछे चले गए। अगर फिर से एक बार हाईलाइट दिखेगा तब पता चलेगा कि डिफेंडर जो है वो पुश नहीं किया, उन्होंने चार्ज नहीं किया, वो पीछे चले गए और उसके वजह से मौका मिला। वैन डर सार क्या ही कर सकते हैं, गोलकीपर उनके सामने एम्बापे है, वो भी 97 रेटेड, वो घुमा के शॉट मारेंगे, हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। Told you, TT, there was a winner in the making, and in that final attack of the game, this is where that experience really comes into play, where you don't tend to lose your calm, and East Bengal FC well fought, but it was the strong team that is Northeast United FC. They've managed to see this through, and along with that have finally secured their 3 points that they were looking out for so long. 1 week of wait, and it was kind of really depressing for a team like Northeast United FC to not win their game. But again, that was a formidable opponent back then. This time the matchups went really close, but look at the quality of his goals and the attempts also being created. Huge props to East Bengal FC that they held on for so long, and in fact created their own attacks. Look at this, a beautiful charge first, it was deflected, and Haaland was there to seize the opportunity. But then onwards, when we went on, there were plethora of goal scoring chances being made, every single time. But this was the one that kind of seized it all, and you could finally see, Imad smiling, and he knows that this was a hard-fought victory, and Northeast United FC, and Imad pretty much at this point can chill, because no matter whatever the outcome will be against Benno 7, it is gonna remain as a Northeast United FC victory. जी हाँ, फॉर श्योर, एंड ईस्ट बंगाल एफसी उनके लिए मुश्किल है कहीं ना कहीं इधर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ, क्योंकि फर्स्ट मैच ड्रॉ हुआ था एंड इस मैच पे वो हार चुके हैं। सो 2 मैच मिला के अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, जिसके थ्रू प्रेशर बहुत ज्यादा इधर बिल्ड होता हुआ दिख सकता है। बट जी हाँ, लेट्स सी, लाइक आखिरी गेम एक बार फिर से हम जानते हैं कि इधर पॉइंट्स के ऊपर तो कोई भी चेंजेस लेके नहीं आएंगे,
बट हो सकता है कि जो प्रेशर इनसे हट गया उसके बाद कुछ अच्छा गेम आ सकता है. बाय द वे आई कैन सी चैट के ऊपर बहुत सारे बैंटर्स चल रहे हैं एंड यही तो मजा है काइंड ऑफ. एंड मैं इधर ये भी देख पा रहा हूँ कि हमारे जो डर्बी फैंस है जो हमारे ऑपोजिट साइड पे रहते हैं वो बहुत ज्यादा उनको मजा आया है चैट बॉक्स के ऊपर. एंड या लाइक यही तो मजा है, यही मजा है. आप चाहे eISL की बात करो, आप फुटबॉल की बात करो, आप फीफा की बात करो, हर जगह पे यही तो मजा है, यही तो स्पार्क चाहिए. You know, yes, football does unite a lot of people, and bringing everybody into the chat, and that banter, we like it. Just keep it good, keep it professional. Just don't go too personal, because then we would have to give you time out, and we would not want to do that, because it was such an amazing matchup that was going on. I'm pretty sure, regardless of the outcome, every single viewer must be enjoying this. Now, if you're enjoying, don't forget to subscribe to the eISL channel, because this is where you're gonna see so much more matchups like this, so end-to-end action. And when you've got the best of the best in the country, everybody fighting for that top spot, such sort of matches are obviously gonna be there for you guys. And well, yeah, I can't deny. I'm still waiting for that Bengal derby, where ATK Mohan Bagan face off against East Bengal FC, and then I'll sit down with you, and then we will have a nice chat, because I've heard stories. I've heard a lot of Yeah. stories. I cannot attest to the fact that ऐसा भी कहा जाता है कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते. If you're a East Bengal FC fan and an ATK Mohan Bagan fan, they refuse to eat at their homes. Such is the passion for their club. And I don't know how much of it is true, but I've just heard hearsay rumors. But regardless, this is not in Bengal derby. Rather, we are heading for the third matchup. In fact, the final game of our evening, ladies and gentlemen. Northeast United FC in their white kit from left to right, and East Bengal in the red and gold from right to left. And we have already told you, no matter whatever the outcome is, those 3 points have been secured for Northeast United FC. Yeah, but one more time, Imad, too dangerous and Bano 7. हालांकि ये रिजल्ट जो है वो शायद पॉइंट्स को तो ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है कि टूर्नामेंट के लेटर ऑफ द स्टेज ये जो राउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर कर सकते हैं. मे बी गोल्स भी मैटर कर सकते हैं. जो गोल डिफरेंस है तो उसको इधर रिकवर करने की कोशिश करना होगा अगर हम लोग बात करें इधर ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से. बट लेट्स सी वो हो पाएगा कि नहीं, या फिर हम लोग को एक का 3-0 वाइट वॉश होता हुआ दिखेगा ईस्ट बंगाल एफसी. बट लेट्स सी वो तो हम लोगों को पूरे 90 मिनट्स के बाद ही पता चलने वाला है. लेकिन जिस तरीके से इधर बिल्डअप की कोशिश किया जा रहा है उसको देख कर लग रहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर स्किल्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिलाई करने वाले हैं इस बार बेनो 7, क्योंकि उनका पासिंग अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं है. वो एक प्लेयर्स को बहुत अच्छे से बॉल लेकर ड्राइव करा रहे हैं. एंड फाइनली बीचों बीच रोनाल्डिनियो टू लीड, बट अभी तक वो ओपनिंग नहीं मिल पाया. Now 6 players have come back for defense there, and this could be that opening that he was looking forward. I felt in that moment, there could have been that chance. And finally we see Vieira coming up, and this is interesting from Imad. And just look at how he's going for the build-ups. No fancy skill moves, just try to constantly keep that pass, that final step over and take a shot. And is it a pair? What? Again, this is happening for the second time. A soft penalty. Last time, I think the victim was, if I'm not wrong, Bhagya. This time it's going to be Beno 7, and it's been missed. No way, Imad. वाह, क्या इमोशनल रोलर कोस्टर चलता हुआ फिलहाल के लिए तो. बट लेट्स सी कि इसके बाद क्या होता है सिचुएशन. बट एज ऑफ नाउ वर्जिल वैन डाइक बॉडी पुश करके बाहर, पूरे ग्राउंड के बाहर फेंकते हुए एम्बापे को, जो कि बहुत कम दिखता है हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग चैलेंज. बट फिर भी मुझे लग रहा है कि इधर वर्जिल वैन डाइक फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी थोड़ा गुस्सा हो चुके हैं. बट लेट्स सी. Thank goodness he did not get a card for that, because we have seen worse things happening to Odisha FC.
This time Theo Hernandez for the rescue, but Ronaldinho wanted to get in through a little bit of attempt on those skill moves, but did not happen. And now Ben07 is back on his attack. He's been utilizing this left wing wide often. A through pass with that left foot did not go where it was intended. The run was right. The the intentions were right. I think there was that little mistiming that came into play, which enabled now almost enabled Imad to get on a counter attack. But Ben07 has managed to retrieve the possession. Yeah. But as of now, एक छोटा सा भी गलती आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं. बीचों बीच से रन निकाल रहे थे रोनाल्डिनियो, बट नहीं, वो नहीं हो पाया, तो नहीं मिल पाया. थ्रू लाइक बैकलाइन के बाहर लेके चले गए रोनाल्डो. इधर एम्बापे, उनको बॉल कंट्रोल उतना प्रॉपर हुआ नहीं उस जगह पे. बट एम्बापे से फिर एक गलत पास. एंड ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से बहुत ज़्यादा गलत पासेस हाल ही के कुछ टाइम पे देखने के लिए मिला है, शायद आखिरी 10 मिनट के आसपास. बट इस बार मौका, लेकिन सही टाइम पे वैन डे सार एडवांस किए, नहीं तो इधर एक गोल था फॉर श्योर. Oh yes, I mean this has been such an end-to-end game. Imad, he's one of those players, like I have constantly been saying, right? Has very strong fundamentals of the game, but Ben07, the most improved player, and this was a good opportunity. Goes with Jarzinho, and yes, scores. Just when we thought that he could have bottled that chance up, he maintained on that composure, went for that extra one pass back towards Jarzinho, and ensured that he sees it through. Usually from that range, the power has to be precise, has to be perfect, because more often than not, usually the keeper tends to save it, and went for the far post, and the angle was perfect for Ben07 to get himself on the lead. And East Bengal, still they want to fight back. They want to make sure that even if they have lost the fixture, they at least go home winning that final individual game. But no, it looks too dangerous. And Imad बहुत ही जल्दी like just एक वो concede किए, and उसके बाद कुछ इसी तरीके से शायद वो कह रहे हैं कि हाँ, like I am meditating, and उसके बाद उनको एक आइडिया मिला कि ये पास किलो, and उसके बाद खत्म करता है. And obviously रोनाल्डिनियो with 95 rating shoot 91, and जब उसके ऊपर आप इस तरीके के पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो उधर से तो मिस करने के कोई चांसेस ही नहीं है. बहुत शानदार गेम अभी तक चला है, बट ईस्ट बंगाल एफसी कुछ देर के लिए जो वो आनंद मिला था, वो अभी फिर से एक बार सेम सिनेरियो पे जाता हुआ. लेट्स सी क्या एक और गोल आ पाता है या फिर नहीं. फर्स्ट हाफ मैं तो कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास ही गया है, क्योंकि शुरुआती 15 मिनट डोमिनेशन था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, बीच में 10 मिनट ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से आया, लेकिन फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड गोल स्कोर करके अपने तरफ लेके गए गेम को अभी तक. तो सो लेट्स सी लाइक किस तरीके से एंड होता है ये फर्स्ट हाफ. I think just when we were thinking that Ben07 will get Roshogolla from his fans, there Imad just said like, hey, it's not over yet. And just when we were thinking, just when I was done completing my sentence, he went in and scored a goal. Such was the quickness of Imad, right back in, and then he's like, guys, I got this. Went in for that meditate celebration, and that's the kind of a personality that Imad is. Always calm under whatever adverse circumstances he's faced up against, and this could be a beautiful run for him. Went in for that play lock, passed it on towards Mbappe. Now he's got multiple options, could go for Messi also, but decides to hold back a little bit because the defense for Ben07 had already lined up, and a final last-ditch attempt in the first half by Ben07 wanted to go for that driven through, but did not. In fact, the time was not there, and the receivers clearly missing. But end of the first half, so guys, we are tied up 1 each on the score line. You can see, it's been such a good game where Imad might not have had the best of possession, but he still has 5 shots taken on goal, and Ben07, all he required was 1 to convert it, and that's the score line in front of him. Yeah, that's why मैं बात कर रहा था कि जो पहला हाफ है वो हम लोगों को ज्यादातर देखने के लिए मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से डोमिनेट करते हुए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड
लाइक 5 शॉट्स उन्होंने लिया था, जिसमें से 3 शॉट्स उन्होंने टारगेट पे रखा एंड उसमें से एक पे गोल आता हुआ दिखा। बट क्या सेकेंड हाफ पे कमबैक आता हुआ दिखेगा इस बंगाल एफसी की तरफ से? हालांकि स्कोर लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो या दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं, बट ओवरऑल में नहीं ऑब्वियसली, बट इस मैच के हिसाब से अगर देखा जाए सेम पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स कि गेम के अंदर किस तरीके से खेले थे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एक बेटर टीम थे अभी तक। बट लेट्स सी, शुरू हो चुका है एक और हाफ एंड जार्जिनियो इधर रन निकालने की कोशिश, बीच में से Oh! माय गॉड, ये कैसे मिस हो सकता? I mean, at this point, Beno 7 might just be cussing himself because Mbappe, I think he's got that 4-star weak foot, right? Even if he has that Team of the Year card, and usually after going for such a explosive pace there, getting that momentum, he had that perfect angle. It just came down to the keeper there, Van der Sar, making yet another save, and Imad really was not prepared for that. But now he's prepared. He's kind of getting that read. That one thing for sure, Beno 7 has been exploiting his Mbappe to the fullest. और बीच में मौका, वर्जिल वैन डाइक, थियो हर्नांडेज, इमाद जस्ट थैंक यू, मौका मिले, क्या बात था, वाओ, इट्स इनसेन, अनबिलीवेबल, जिस तरीके का पास था, ऑलरेडी मेसी मौजूद थे एंड मेसी की तरफ से गया एम्बापे के पास एंड एम्बापे फिनिश किए, बट पास अलाउड था। आई थिंक मे बी इधर जो लास्ट डिफेंडर थे वो बाहर नहीं गए थे एंड ऑफसाइड ट्रैप नहीं बना था, दैट्स व्हाई इधर ये मौका बना है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्पेशली इमाद बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर इसी तरीके का स्कोर लाइन बना रहा तो वाइट वॉश होता हुआ दिखेगा ईस्ट बंगाल एफसी इस मैचअप के ऊपर। TT, even I still can't digest. I really felt. I mean, had that been in a slow-mo, if we could have gotten a better look, then we could have said that yes, maybe he had made that run through. But the moment he had received that pass, he had already beaten those defenders. And yes, it happens. And I think he had. I mean, otherwise he would have just been given offside. But regardless, Imad, beautiful finish. That is what you would expect. Those sort of good passes, risky passes that turn into his favor more often than not, and so has been his composure inside this game, right? He's been holding himself off, but this time Beno 7 goes in for that step over, but the defenders were present, the numbers were there. Hakimi, Virgil van Dijk, two forces of nature, so tall and well built there, just making sure he doesn't pass any further. But now Imad again on the counter attack, trying to push in through with Theo Hernandez, and was trying to look for that opening. We haven't seen any of those German crosses, but with Ronaldinho could go for a plethora of skill moves, and a little many maybe for him attempted, but this time Beno 7 just read it. या 67 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड उसी के साथ आखिरी जस्ट 30 मिनट का गेम, सॉरी 20 मिनट का गेम इधर चालू होता हुआ दिखेगा, आई थिंक 22 मिनट्स के आसपास। बट जो चेंजेस है वो बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है इधर ईस्ट बंगाल एफसी को, क्योंकि ईस्ट बंगाल एफसी ऑलरेडी इधर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं इस पूरे एंटायर मैचअप के अंदर। हालांकि अगर ये मैच जीत भी जाते फिर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बट आई थिंक जो गोल डिफरेंस है उस पे बहुत कुछ जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अभी भी अगर कमबैक होता है तो। बट आई थिंक इट्स टू टफ, क्योंकि माद जिस तरीके के फॉर्म में अभी चल रहे हैं उनको रोकना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन पिछले गेम पे जब कोऑप पे गेम चल रहा था, आखिरी गोल शायद इमाद की तरफ से ही आया था मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो भी एक मैजिकल गोल था। सो ओवरऑल अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उनके पास प्रॉपर मौका है कि इस मैच को भी इसी तरीके से जीत के जाए, क्योंकि स्कोर लाइन भी उनके ही हित पे है। मेसी डाउन करके हालैंड लेके आएंगे एंड जिनोला वो भी इधर आते हुए, बट ऑन द अदर हैंड जॉर्जिनियो को डाउन करके केविन डे ब्रुयना को लेके आया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट बंगाल। एंड आखिरी 20 मिनट, लेट्स सी क्या हो पाता है इधर। Oh,
What a beautiful through pass. Only, Imad can play such passes like this. Where David Ginola goes in for a ball roll, wanted to go for a pass. But, that initial attempt on trying to create those openings was so mesmerizing just to witness, right? And for now, let's see what can Imad pull off, because I think after scoring the second one, I guess it's right to say that Imad has sort of taken control over the game and he's playing with much more freedom. And, Beno 7 feels like he's been shot back into a back foot, but a green time shot from Ginola. And I am stuttering as to how the keeper made that save. Mbappe to Haaland one more time. But deflection एक बार फिर से आता हुआ Hakimi as of now. Hakimi with the ball. पास निकालने की कोशिश था, De Bruyne को दिया गया. Obviously Mbappe थ्रू खिलाने की कोशिश था De Bruyne के लिए, लेकिन इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है. And Mbappe अगर बात किया जाए, उनका ड्राइवलिंग बहुत अच्छा है, पेस बहुत अच्छा है, शूट बहुत अच्छा है, बट आई थिंक पास उतना अप टू द मार्क नहीं है. एंड ऐसे पासेस के लिए आपको या तो बेकम चाहिए या फिर मेसी चाहिए या फिर रोनाल्डिनो चाहिए, अगर आपको करना है ऐसे पासेस. एंड आई थिंक बेलिंगम एज वेल, ये वो भी कर सकते हैं, एंड केविन डे ब्रुयने भी. लेकिन केविन डे ब्रुयने इधर आई थिंक मुझे लगता है कि उल्टे पोजीशन में थे. एम्बापे अगर उधर रहते, डे ब्रुयने अगर पास देते तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था. बट ये आखिरी पॉज शायद फिक्सेस इस पूरे गेम का हो सकता है, और इसके बाद सिर्फ 9 ही मिनट बाकी हैं एंड हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा. I was actually, while you're speaking, I was kind of checking up, looking at the stats of Mbappe's Team of the Year card. So I think this card at least has better passing stats, has 93 short pass and even long pass is decent. 80, I'm pretty sure with the chem styles that they can get on him would be a decent number. But again, takes me back to that gold Mbappe card. Has got 36 defense. Even Mbappe was shocked, but right now Northeast United FC, they could poach on it. Oh, last ditch move and well kept them from scoring the third one. Still, chances alive for East Bengal FC. Would want to at least get an equalizer, and that is exactly what their intentions are. Hakimi to Mbappe at this point. Pele is open and still getting man marked at this point now. KDB with a pass on towards Hakimi. Pele has a little bit of room, needs to perform that skill. Oh. But no. There you have it. Corner. Yeah. Finally, आखिरी चांस फॉर ईस्ट बंगाल एफसी. अगर उनको ड्रॉ करना है इस मैच को तो यही एक लौता चांस हो सकता है. लेकिन एक बार फिर से कॉर्नर के लिए चाहता हुआ बॉल, शॉर्ट कॉर्नर लिया जाएगा. एंड ऑफिशियली शायद मुझे लगता है कि 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है. एंड वो एडिट टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं, बट इस बार 1 ही मिनट का एडिट टाइम मिलता है. लेफ्ट फुटर था एंड वो हाथ में बॉल लेके ही पूरा गेम खत्म कर सकते हैं. बाय द वे, yes, there you go. Imad being cheeky as ever and finishes it off. Beno 7 not the happiest, but it was a good match nonetheless. It was a really good matchup, and Imad really had to sweat it out and do whatever it takes to win, and which eventually he did. Made those calm zen mode celebrations. He knew that there's no need to panic, no need to do anything at all. But what a beautiful game it was. In fact, I must say that this was the best matchup that we witnessed today. Not by the scoreline, it was still a whitewash, but with the gravitas, with the intensity of the game, right? From all 4 of their players just putting in their all. And this is why we love football as a game. And when it comes down to FIFA, it makes things even more interesting and exciting for us gamers also. Look at this! Look at this! Was it not offside, TT? Come on! It felt like that. It felt like that. But still. Yeah, but did you not see that? I mean, when did he make a run? Because Messi was already ahead. बट आई थिंक इधर VAR तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये AI ही काम कर रहा है, इसमें तो VAR की कोई जरूरत भी नहीं होगा ऑब्वियसली. एंड वही चीज बाय द वे, लाइक हाँ ऐसा लगा, लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए लगा कि शायद
ये हो सकता है ऑफसाइड, बट मे बी ह्यूमन आइज जो है वो एरर कर सकते हैं, बट एआई नहीं, एआई भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन या बट ओके। ये जिस तरीके से खत्म हुआ ये ओवरऑल मैच पूरा, अगर स्कोर लाइन की बात करें तो व्हाइट वॉश होता हुआ इस बार ईस्ट बंगाल एफसी, एंड उनके लिए पोजीशन उतना कुछ खास नहीं है। मैन ऑफ द मैच नन अदर देन सार सेव, एंड उन्होंने 4 गोल जो स्कोर किए थे वो भी पहले ही हाफ पे सिर्फ और सिर्फ उसी से बहुत बहुत ज्यादा इनकी टीम को भी कॉन्फिडेंस मिला, एंड डोमिनेशन भी बहुत ज्यादा लाजवाब लेवल के देखने के लिए मिला। Indeed, no second thoughts on that, to be honest, TT. But we have seen the AI making some of those errors, especially in that matchup against I think it was ATK Mohan Bagan going up against Odisha FC, and Vicky and I think it was Vicky and Bhagya. Yeah, that soft pen and a red card, that was not there. That should not have ever happened. But let bygones be bygones. Let's take a look at the leaderboard and see, after today's games, where do all these clubs stand? At this point, no doubt the winners will be FC Goa, the leaders, in fact. 2 games played already, 6 points up. Then trailing behind them will be Mumbai City FC, 1 draw and 1 win. But Kerala Blasters, having played 2 of their games, are still yet to find a single point on board. And East Bengal FC, I think, after 2 games played, 1 draw, 1 loss, and the same can be said for Jamshedpur FC and Chennai FC. 2 games played and both of them draw. Not the best of starts for the defending champions. या बट अभी तक अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो पे आने वाले हैं इधर जमशेदपुर, ईस्ट बंगाल, केरला ब्लास्टर्स, क्योंकि इनके 2 मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पाया है, एंड केरला ब्लास्टर इवन उनको तो एक भी पॉइंट नहीं मिला आज के मैच के बाद। सो बाद में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि अभी जस्ट हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, क्योंकि अभी भी बहुत मैचेस बाकी है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कभी भी कोई भी टीम कम बैक करके आ सकता है, कोई भी जंप कर सकती है इधर पॉसिबल के ऊपर। सो वो सब सरप्राइजेस के लिए हम लोग तो वेट करेंगे, लेकिन वो जो सरप्राइजेस है उसको बनाने के लिए प्लेयर्स क्या करते हैं वो देखना और भी ज्यादा मजेदार होगा। सो या लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे, जो कि कल होने वाला है। Now that being said, finally we are done with all the games, and what a wholesome day it was. A good night of football that we all witnessed, and I think, I'm pretty sure you all did. But with that, this marks the end for our broadcast for the evening, ladies and gentlemen. We'll be calling it a night. We'll see you tomorrow, same time, so you don't go anywhere. You till then, have a good night.